mobile phone in charge. Got it? This way. How about we keep this mobile likewise, and we got to see ourselves from the another mobile, and we'll have our classes just in normal one. No hassle, not too many questions. Not from this account. Switch the account. I'll be teaching you. Where is your HSW homework copy? Where is your HSW homework copy? Yeah. Have you done your HSW homework copy? What is your homework? I'll give you the punishment very badly. Show me the HSW homework. There is only for you. Otherwise, I will not spare you. So we're gonna have now the classes. Okay? I will not spare you. If you don't show me the homework copy, I will not spare you. Why did you not done your homework? HSW homework. You have a 1 month. And in a 1 month, you will not complete any homework. No, this is not gonna work. We are going to be doing for us. Why, Arab? Why are you not And being your serious? sister has, and Why your are you behaving like sister this? has not done her homework. You also, your brother also. Why are you wasting your life? Your brother is always following you. Yeah, that is the And reason. your sister is also following you because you And do you- not try to make your homework. Then your brother and your sister is also And not. we are not gonna Try we are not gonna do this every day. Like you have to make sure that you have to follow the routine. You have to Sir, follow our rules. Your Leave it picture. with me. That's fine. Let everything come. How many days we gonna hide? One day or the other day it has to be done. So come now. So what I'm saying here, ma'am, whoever has not done the homework, beat them. Punish them. Otherwise, they will repeat this. Punish them. And mention the same to their parents. So with keep in hand. And I will inform your parents. You have a time. Then you don't have complete. Why are you not doing the homework? What is wrong with you? Why don't you do the homework? Like, tell me that, sir, I have some of these important works. Like I am managing up a business. I have a tea stall. I have some big business run by. I'm assisting my parents. I'm assisting my father. Are you doing anything like this? No, are you really helping your father in something? So why are you not doing the homework then? Do your homework. That's a basic thing. If you won't do your homework, what are you gonna do? Like I really wanna know what are you gonna do then? Let's say if you not do the homework, what are you gonna do? What are you going to do then? If you won't do your homework, if you won't do anything, then what are you going to do? Okay, fine, let's move on. So, as I said, northern hemisphere, southern hemisphere, and everything is all learned. Now, let's look further. What is the equator? Line that divides the earth into equal half. What is that half known as? Hemisphere. What is the sphere? A sphere is the shape of the earth. Hemisphere is half of that earth. In which direction earth rotates?
West to east. West to east. I have also drawn you a direction arrow west to east. Fine. Then let's go further. Right now, very light here. Okay, fine. So, now we are moving on to the next topic, latitudes and longitudes. What is the latitude and what is the longitude? There are many imaginary lines on the globe that runs parallel to the equator and vertically across the globe from North Pole to the South Pole. The meeting points of these lines forms a grid, and that also is very imaginary. The grid is helpful in locating a place on the map, and this this helps you locate a place on Earth. Okay, and that has to be in degrees. What does that mean by? I want to tell you. I will have to explain you this. There is no actual line on the Earth. This is all for the screen. This is all for the paper. Okay. Let's say I want you to measure your. I want you to. Let me give you a good example. Let's say I want you to measure the length of this pen. I want you to measure the length of this pen. So how are you going to do that? You're going to do that like you will have to bring a scale. How about if we don't have a scale? Let's say we don't have a scale, then how are you going to do that? Then you will make lines, 1 line, 2 lines, 3 lines, 4 lines, 5 lines, 6 lines, 7 lines, 8 lines, 9 lines, 10 lines. And out of that 10 lines, you will be explaining us that 4 lines are white, 6 lines, 5 lines are, or let's say 6 lines are green. Okay, 3 lines are white. So 4 plus 6, 10 plus 13. So it's a 13 line pen. Right? Similarly, people never had the idea that how long or how much of breadth was Earth. So they just made the Earth let's say they divided the Earth in using lines. So okay, so those lines are known as longitude and latitudes. They are not for real, but they help you locate the places. Okay, they only work on the screen. They only work on Google Maps. They are not for real. You cannot find this line drawn on your at home, drawn anywhere on the road. This is imaginary. This is not real. But still, this works on Google Maps. Got it? So latitude, what is the latitude? Latitudes are lines which are parallel. Okay, and longitudes are lines which are vertical. So likewise you have your Earth. So there you go. This is longitude. All starting from a common point. Okay, which is the northern pole here, northern pole, and all merging up in the southern pole. All merging up in the southern pole. Got it? So the horizontal lines are known as latitudes. Yes, come here. What is your name? Yes, My name is Tanya. What is your name? What is your name? My name is Tanya. Let me see your homework. Guys, excuse me. Check this out. This homework is done by our cutie. The smaller kids, say hi to the camera. Say hi. Okay? Say hi. Hi. Hi, say hi. Yeah. Okay, what is your name? My name is Tanya. How old are you? I'm 4 years old. So Tanya has done this homework. Very nice. Very nice, Tanya. In which class are you? Nursery. You must write nursery here. Okay, very nice. Very nice. And whoever has not done the homework, they will be punished. They will get punishment for that. Just check her out. Very nice. So cute. So nice, cutie. What is your name? My name is Tanya. How old are you? He has completed all the work. 4 years old. Very nice. Good girl. Good girl. Ma'am,
I have homework submit here, and very nice in a Tio, white boy, Tio, white boy. Yeah, and this is a monkey, and these are shapes. Okay, fine, yeah, very nice. So these are some work done by our smallest, a very small child, Tanya, of nursery class. Say hi to the camera, say hi to everyone. Yeah, Tanya. She's getting nervous. Okay, it's her first day after vacation. Vacation. So, Most of the students are absent today. but the homework is not done by Araf. Araf, this is not homework. Dear, you also Yeah, I have to know do this. the homework. And ma'am, Submit the homework copy here. No? Come, Tanya. Now, I'll give it tomorrow, okay? now let's go. Northern hemisphere, southern hemisphere. Latitudes. How many latitudes are there? How many latitudes are there? If you keep on counting the latitudes, they will give you like 180 latitudes. How many latitudes? 180. It must be written somewhere, and if not written, okay, you have to like keep this in mind, even if it's not given here. And otherwise, the people will help us. Like, how many latitudes do we have, guys? Let's get down to the question. How many latitudes are there? How many latitudes are there in total? There are actually, if we're not wrong, total, the 181 parallel latitudes. How many latitudes? There are 181. Always remember, guys, there are 181 latitudes in a total. Okay? Note, because the northern pole and the southern pole are 90 as single points rather than full circles, some geographers excluded them as lines. There are 129. That gives you now 179. Let's cut the confusion first. Cut the confusion and total me the latitudes number in single. 181 latitudes. 181 latitudes. Got it? Yeah. 181 latitudes. So, let's go. Let's get down to the work. So we have literally got like these many latitudes, those many longitudes. Let's go further. So the major latitudes, see, there are 181 latitudes. You don't have to remember each and every latitude. You have to remember only few. Let's say what are those? ACECA. Arctic, that's Arctic. That's Capricorn. That's Capricorn. Okay, Capricorn. Then this is Equator. This is Cancer. This is Cancer, and this is Antarctic.
Okay? Where can and so these many latitudes are there. Got it? Yeah. Got it? Fine. Let's go further. What is the value for the Tropic of Cancer? 23.5 north. Capricorn 23.5 south. And Arctic 66.5 north. And Antarctic is down below the south. So that's going to be like 66.5 south. Got it? Let's go. Longitudes and latitudes. What is the longitude? These are also imaginary lines that pass from north to south and they are numbers from 0 to 180. Okay? Likewise, they are circular, this way. If you want to see them for real, you got to see it on the Google Earth. Okay? I am going to make you show the same on Google Earth. So what's on the Google Earth here? If you want to see that on Google Earth, yeah, let's see that on the Google Earth, right? Arab, are you getting better? We are gonna see that on Google Earth. Are you getting me? Yes, sir. Yeah. Let me show you that on Google Earth. Precisely, you have been watching from places I don't know yet, but they are watching you. So, check this out. Yeah, let's go. Are we stuck somewhere? Where's the layer? Okay. Leave it. Then I gotta show you the grid lines. Check this out. This is for real. This is your Earth. And if you wanna know right now where we are, you're gonna click somewhere here. Or now, yeah, this one. Clicking on that one will locate us. Or this will locate us. See, it's gonna make you hop on your local area. This is right now where we are. Can you see something? These lines are known as latitude, while these lines are known as longitude. These are long, so longitude.
These are latitudes. Okay? Yeah. Which map is this one? This is the physical map. And how many maps do we have? We have a physical map, let's say we also have a political map. Thematic map, yeah. Thematic map is on some themes. Like if you want to see rainfall, they're gonna be visible on the thematic maps. Okay, and if you want to see something else, then you're gonna be visible on something else. So this is also done. Let's get down to the work again. Got it? So these are the latitudes and these are the longitudes. Got it? So how many latitudes and longitudes are there? 181 latitudes and 360 longitudes. Because you have to take a full circle. Come on. See. You have to take a full circle. This. Okay, and this here is the total of 100. And how many major latitudes are there? Name them: Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, down below, Tropic of Capricorn, Equator, also written here. Okay, and Antarctic, Arctic. This is Arctic second, and down below is that. This is the real Earth. That's a real picture actually. That's a real picture of the Earth. Okay. And if you want to locate yourself, it will locate you also on this very time. On this very time, you can also locate yourself. Don't you get confused? This is for real. This is not for real. This is our actually the road area where we are. So you can get located easily by using the grid lines, the latitude and the longitude. Got it? So that's done. Let's get on to the map now. How many maps are there? So if you want to know about the map, there are some maps like political map, physical map. Okay, there are maps like this is a real map. So the maps are also there. Okay. Excuse me. Work. If you want to know about the map, then there are some maps like political maps or physical map. Okay, so what is a political map? Political map is about the politics, and likewise when politics comes, it divides the lands. It divides the land. So when the land gets divided, it has its name, thereby it gives country and all that. So political map shows countries, shows states and their boundaries. Got it? So see, what does politics do? Politics never help you. It only divides things. It only divides. So that's why the continent is being divided into countries. Countries have states have their boundaries and everything like this. So that's the reason why we say it is a political map. Means it's a map where you will see the whole continent being divided into many things. Got it? Excuse me. We have
color, come here. Strong. Is that switched off? Let's go. Physical map. If you want to know about the physical map, that simply says the physical means the various landforms here. The various landforms, different landforms you have on the land, like mountains, high mountains, are there deserts, are there plains, are there coastal areas, are there plateaus, are there, and all these things are present in India also. For example, let me give you a good example of it. We have hard desert in Rajasthan in India. We have coastal places like Gujarat and other have the coastal land, and Goa also have coastal. Goa also have coast. Then we have the plateau region in the South Deccan Plateau, which is Mumbai and the region there. Then we have icy glaciers where you have the icy land, like let's say Ladakh and other region, Jammu and Kashmir and other. Then we have the hottest region like Rajasthan, which barely receives any, what to say, that barely receives that barely has a, what can you say, rain. They barely have rain. So that's also the okay. Thematic map. I will let's move on to the next one. It was on themes. What was on themes? Themes. What is themes? Themes is what themes you have, like rain, forest, vegetation. Okay, whatever different themes are there, it gives you themes. So tell me, latitude number 23.5 north. What is this one? Cancer. Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. 23.5 Tropic of Capricorn. Okay. Then latitude 0 equator. Latitude 66 and north upper Arctic, which I have shown in Google Earth, and 66.5 south Antarctic. And latitude longitude 0 prime meridian. Prime meridian. Let me show you. This is the prime meridian. This is a prime meridian. Where is the prime meridian? Anti-meridian. Okay. Similarly, you have prime meridian. It goes from Europe, so it must be near Europe. Where is Europe? There you go. And yeah, as I said, it's around Europe. This is the prime meridian. Can you see this? Prime meridian. Got it? It goes from London. It goes from Greenwich, a place in London. Okay, Greenwich is a place in London. So it passes from there. And whatever time is right now is being calculated from that prime meridian. Okay, who made the time? Like it's around 44 minutes past 8. 44 minutes past 8. Who made this? It is made by Europeans. They have made the time system. Okay. And they made this time system using a prime meridian. Prime meridian is an imaginary line that goes from London, Greenwich. Got it? And India also has its own time
time length, which is an Indian Standard Time, which passes from Ujjain of UP. Okay? Indian Standard. Indian Standard line. See, Mirzapur of Uttar Pradesh. It passes from Mirzapur of Uttar Pradesh. This is it. So this is the Indian longitude. See, what I mean by, like, if you visit to Mirzapur, you will not find it. The satellite out there in the atmosphere space is calculating our time from this, from UP. Got it? Reading of map. What is the reading of the map? What is? Give me a pen. I don't know why this much time only. So we will always be having a single class of reading of the map. Let's go. Now our main course is reading of the map. You have to learn about reading a map. Good. So in which you will have to first learn that there are directions related to the color of the map, will give you information, legend of the key of the map will also give you the information, and the scale will also give you the information. So these are the 2, 3, 4 points onto which your map will be, your maps are being read. So what is a map? This is very important. This is a map. It is also a representation of the places. Here, representation of the area of the earth. Okay, and it is also presented as flat surface. Well, for a globe, it is represented like a ball. Globe is represented like a ball, but the map is represented like a flat surface, right? So there you go. North direction. How many directions are there? North direction and south direction. Okay. Yeah. South direction, east direction, and west direction. Okay. Now you tell me in which direction our Earth rotates. West to east. Right. West to east. And color. If we'll go for the color, we have to understand one thing, that blue is representing water body, and likewise you can see that there are certain colors for grass, green, okay, and then grey color for hilly area, and all that. These are some legends of the map, or you can also call it key of the map, where cities will be shown by dot, boundaries, railways, schools,
use icon, church by cross icon, like in bridge by some parallel line having intersections in between, every road by line having all little intersects in between airport by aircraft image. Okay, so development on some days. Okay. What are the disadvantages of using a map? How can you like what are the disadvantages? So if you look for the disadvantage of the map, yeah, you have too many disadvantages. Like not too many disadvantages, but yes, the one thing is it's very limited. You cannot take the map everywhere. That's the worst limitation. Right now you have mobile, so you can carry mobile anywhere. But you cannot carry a piece of paper everywhere in different seasons. There are seasons like monsoon, there are seasons like summer, winter and all that. So you cannot carry a map in during summer rainy season, because rainy season has its own disadvantages and advantages. So disadvantages are like it is worse for the paper. Simple. So you cannot carry the map to some area which is very rainy. Obviously, so that has a limitation. So there is a hindrance of this factor. Okay. Limitations. Constraints you can say. What is this word? Globe, equator, states, strip, latitude. What is this? No. What is this curve? Come on. Earth, meridian, desert. Don't you have a idea? Use your mind. It's from the chapter itself. Huh? Come here. We need to find a bird. How can't we find this bird? I can't beat this. You also can't find the bird. Come on. What is the bird? What is the bird? Wow. One word and all our knowledge tested zero. Proved to be zero. Use your mind. What is this word? Let's look at the what is the word?
suitable word from the symbol EPIH. Entire. 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 Entire is total. The entire earth, the whole earth, your entire family, your entire classmates. Have you solved this one, each and everything? If you need any kind of resistance, you can. Completely. Couldn't have happened. I think this is false. Correct? Complete answer. First. Anything you have the result. Done. Give me some time. In the meantime, you have a camera. And you have to. Like it. Have you completed the first chapter? How many chapters in there is total? How many chapters in this book? 16. 8 chapters and then in half 4. 4 chapters will come in a periodic test. So 4 chapters
learn the first chapter. First chapter is done. Second chapter is also done good. And the third chapter is not done. So, sir, first make And what time we have to leave them for lunch? 9:30. Sir, you have to please solve the question answers for the third chapters. For the third chapter also. Yeah, because question it is important to complete the question first. So help me and complete the third chapter. Why she? Yeah, she is studying. She made them learn. Making them learn and make sure the student learn both good English and Hindi as well. And Hindi classes. She will take the Hindi classes. and they must have a good improvement in some basics like book reading, learning the basics so that they can speak to the public and everything. So, like we have put everything live here and we will be watched by come in. Okay, you have completed first question. Good over. Show me the work. Which of the following is the natural things? Water. Which of the following is the living things? Tree, nice. Have you done by yourself? Which of the following is the natural organisms? Organisms. Good. Which of the following is the man-made things? Things which are Man-made things. man-made, The man-made, things which is created by the man, by human. The things which is created by the man. Television. We are created by the television. Things not nature. human have created. This one is wrong. You have to correct it. Okay? Which of the following cannot be produced? Good. And then, yeah. Island. Yeah, island. That's island. Okay. Now See, that's why Yes, it's silent. please does big fish this question is solved by last time. Indians, neighbors, island, Pakistan, and Television, right answer. Neighboring island, no. Neighboring island is not that one. Neighboring island is Maldives. Island country. Solve it, do it first. Go and solve the second question. Or otherwise, your like our neighbor, our we are going to have our exams. Tell me if you need some kind of help. Mention me if you need some kind of help. 3,440 kilometers from north east of and 2,900 something kilometers from and where it is given, it is given.
provide the book of a standard LKG to Shanti, his mother has already told me. Have all the necessities done. Being done. You give them while they will take the lunch and you will have the lunch, you will give them. So they will teach them easily, sir. LKG book is teaching Hindi book, they will teach them a book. Yeah, I'm not denying. So why are we staying here? See, both the students are solving the exercises. These are not the keys. Oh my God. Okay, fine. If you have the keys, So give me the keys. Give me the keys first. Because we will have to provide the LKG book of standard So LKG. Shanvi and Only Shanvi. Shanvi only. What about that boy? I have already given the book. LKG book. So the LKG book is in the last drawer. Okay, so have you solved it? Solving. It is done. Peninsula. What is the peninsula? This portion here. This portion down below, which is all covered by water in three sides, on three sides, is the peninsula. Okay. So piece of land which has three sides water out on it is known as peninsula. Got it? What else is there? What is the question? Of India, boundary of India. LKG. This is of LKG, right? Why are you keeping this water here? This is not mine. It don't matter now. It's just a bottle we have to keep. So check out the book once. Just have a मैम ये क्या लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा है ना ये दो वर्ड और ये ऑटो क्या लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा है ऑटो रिक्शा Ma'am, all the books are intact. How many books is this? This set contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 books are there. And all books are intact and all good to give them. So give them now. We have to first add it. Yeah, okay. So I'll have to make a slip for that, right? But it's not necessary. But if If you want the receipt to be in the bag itself, we can arrange that. Otherwise, if you want to give them directly, we can also do that. How do you get it? Whole list. General list. I will be preparing general list.
Before you want to dispatch the book, do you want me to calculate or not? Yeah, we have to do it. What is the date today? 29. 29. मैम ये रोड ये क्या लिखा है Locust. This is an insect name, locust. भाई ये भी लोकस्टी लिखा है और हनी भी स्पाइडर बटरफ्लाई और हॉर्स फ्लाई भी होता है मतलब वो मक्खी On the and yes, surrounded. Which question are you asking? Southern India is surrounded by what on three sides called Indian Peninsula. Peninsula. Yeah. Give me the bag. Add it first. Give me the mobile. No, you can do that on Excel also. मैं जाऊँगा ढूंढेगा. Come in. What happened? Have you completed your course? Okay, ma'am is coming soon. Go and sit in your class. Ma'am is coming soon. मैम कंप्लीट हुआ Completed? Now come to the question answer. Ma'am. Don't you worry. Once I have if I have this list sorted out, then I don't need you. I'll send you. Yes, ma'am. What is the course? Plus one LKG. LKG. Plus two is there, plus one is plus four is there. Got it, ma'am. What happened? Where is he going? He went to home for the LKG. Yes, ma'am. Don't you worry. Or leave it, I will do it myself. नर्सरी का एसोसिएट के अनुसार वही होगा. वैसे मिला लीजिए. पहले क्या है? Maths. Infinity maths. Tell me the infinity. Zero. Alphabet English book, do you have any alphabet? This one. 310. Give that to me. Let me have it.
230. Which book is that? English. Name? Wisdom. Yes, ma'am. 230. 265. Pencil, writing. Writing. Easy writing. 265. Easy writing. Pencil. 2. 265. Yes, ma'am. English writing. Pencil, plate. Pencil plating. English. 265. 265. Hindi. Name of the book? Drink that much water, right? Sugar. 240. Yes, ma'am. English writing and Hindi writing. English line. English plating. Yes, ma'am. 175. Rice. 175. Picture book. Picture book. Yes, ma'am. 195. Picture bunch. Eight people there. Price, ma'am? 195. 195. And this one? The plain book? Paint boot? 184. 184, the paint boot. Right, ma'am? So I must total them. Don't worry, don't worry. I have information. Submitted 1865. It is 65. Um, 1865. Just one, ma'am, just one. 1865. Ma'am. Eight. How many points? You want this slip or not? Okay, give me the slip. Yeah, we can send the slip as a PDF also. There will need it in printed form, so why are we bothering you, right? They have they already paid? 3,500 have already paid only for admissions, but gradually they will pay.
boss is demanding, like, okay, ma'am, please give me the book. I will give to the principal. Happily, ma'am. Or
I will have to have your mind because I need to buy a shampoo. And you need to put that spray bottle so that we can use it to wash. Are you getting me? सर सैपलोन का पाउच आता है कपड़ा बोले इनसे पाउच और उसमें डाल दो ठीक है ना चलिए जल्दी लेकर आइए बच्चे के सामने बोलिएगा ना ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है कैसा बता दीजिए तो बच्चे जो है ना लेकिन कैसी टीचर रखती हैं तुरंत में क्वेश्चन करने लगेंगे सभी पूछे पर्सनली आता है ठीक है ना मैम बच्चों के सामने मत पूछिए जानती हैं आजकल के बच्चे तुरंत में करने लगते हैं क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को कर रहे हैं ना इसीलिए हाँ ये बच्चा बहुत तेज है तुरंत क्वेश्चन करने लगेगा मैम क्वेश्चन पूछ रही हैं ऐसे कर रही हैं जो भुवनेश्वर की मम्मी भी बोल रही थी कि एडमिशन कराएंगे बच्चे का छोटा बच्चा है ना और हाँ बहुत दिन से पढ़ रहा था भुवनेश्वर 1 साल हो रहा आप जानती हैं तो वो हम लोग रेंट पे रहते हैं ना तो जैसे कि हमारे बाद ही वो लोग आए मेरे सामने आए हैं अच्छा तो इसीलिए हम झाड़ रहे कि 1 साल हो गया कब आए थे जून में ही आए हम अपने शोर पुराना स्टार्ट हो गया है हाँ जून में ही है उनके पापा लोग नहीं आते थे दिल्ली तभी उनके अंकल आते थे अंकल तो चले गए आप अंकल नहीं चले गए तो उस दिन दोनों फास्टिंग किए हुए थे इतना ना गर्मी था कि सबका हालत खराब हुआ था वो भी नहीं था पूरा पानी के दोनों फास्टिंग किए हुए थे आप कहीं और रहती थी हम पहले हाँ हम पहले कहीं और रहते अपना घर का हुआ था मेरा हजीगंज में रहता है हाजीगंज यहाँ हाजीगंज पास में रह रही है हाँ कुछ ऐसा हुआ कोरोना में कि हमको सारा चीज़ डाल दिया तो यहीं रहती है रेंट पे आ गए कब से 4 साल से वही तो कोरोना के बाद से हुई इसमें हस्बैंड इंस्पायर कर गए ना कोरोना में कोरोना क्या है कोरोना के कारण नहीं ब्रेन हैमरेज हो गया जैसे घर में हम लोग का गोल्ड का दुकान था ना तो गोल्ड का तो एक्चुअली इनकी बीमारी में भी बहुत लग गया और सेल भी नहीं होता था गोल्ड ऐसा होता है हाँ सेल नहीं होता था अब कोई खाने के लिए सबको तो दिक्कत होना कमाने के लिए सोना चांदी क्या कर देगा नहीं सबसे पहले लाइव देखना होगा ना हाँ तो इसीलिए तो कोई गोल्ड खरीदने आता नहीं था तो हम लोग इसी में मतलब थोड़ा सामान आज इनको टेंशन हो गया कि नहीं बिक्री होगा तो कैसे क्या करेंगे समझाती हुई समझाते थे तो लेकिन माइंड पे जो घर का मेन मालिक है तो उसको तो टेंशन लगेगा ही ना दिमाग पे नहीं है कब हुआ ये 2020 5-6 साल हो गया वैसे
फिर भी बेटा को दिए तो बेटा भी हैंडल नहीं कर पा रहा। दोनों बेटा, बेटी भी है, नहीं बेटी नहीं, तो दो बेटा है। बेटा बेटा को भी ये संभालने के लिए नहीं संभाल पा रहा। दोनों का साथ हो चुका है। हाँ दोनों का शादी। दोनों यहीं रहते हैं। एक पटना रहता है, एक मेरे साथ रहता है। पटना में क्या करते हैं? पटना में टीवीएस वो है मुंगेर कहाँ इधर क्यों, तो उसमें जाता मसौड़ी, वहाँ जाता टीवीएस में। तो क्या वो मतलब गाड़ी का ही कुछ शोरूम में काम करता है, लेकिन उसका काम है पढ़े लिखे वाला, मतलब हाँ वो बिलिंग करते हो, मैनेजिंग करते हो, मैनेजर होते हैं ना। हाँ तो वो बिलिंग करता है। अभी मतलब एक्सीडेंट हुआ है तो फिर भी घर पे ही बैठे बैठे उसको कम करना है सारा। क्या हुआ उनको? बाइक से निकले तो सुबह काम पे, उसमें संडे में छुट्टी नहीं ना रहता है, तो संडे के दिन ही जैसे कि एक आदमी का हेलमेट गिर गया, एक का हेलमेट गिरा हुआ है, बीच से ओवर ब्रिज पे गाड़ी रोक दिया और दूसरी तरफ से उतर रहा है, ये बाइक चला के जा रहा था। अब वो इधर हेलमेट पे चलाता है तो बोलता है कि भैया उसके ऊपर से नीचे गिर जाते तो हम पूरा बचते ही नहीं, और ये इधर से करता तो आदमी छुपा जाता, आदमी मर जाता वो। तो हम गाड़ी पे ही जाके ठोक, और गाड़ी जब ठोका ना तो गाड़ी 3-4 पलटे के जो पिक्चर में दिखाता है ना, गाड़ी संग ऐसे घुटती वैसे पलटी खाती है। तो गिर गए थे वो? गिर गया, हेलमेट में इतना छेदा हो गया, लेकिन सिर में चोट नहीं लगा, खाली नस मसल्स में चोट लगा, फ्रैक्चर कुछ नहीं हुआ। सब फिट है? सब फिट है, खाली मसल्स में, लेकिन हाथ आकर उठाने नहीं दे रहा है, मसल्स में जो लगा है नस में हाथ उठाने नहीं दे रहा है। ये कुछ दिन पहले का इंसिडेंट हुआ है क्या? 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए इसीलिए। कुछ ना कुछ तो सबको होता है, कब क्या होता है किसी को पता नहीं होता। बाहर भी जॉब पे है, क्या करती है? वो भी मोटरी वर्क पे ही कहीं काम करती है, वो भी उसका कंप्यूटर पे काम है। वहीं पटना में? पटना में। और यहाँ तो एक और बाइक है, वो अभी बच्चा है ना, इसीलिए छोटा है वो भी। हाँ 1 साल की बेटी होती है। अच्छा, तो बोले तो मैं जमा भागी। अब बेबी भी है ना तो बहुत चंचल है, रोती नहीं है हर बात पे। नहीं सर, जैसा पेरेंटिंग करेंगे वैसे बच्चे रहेंगे। अभी तो धीरे धीरे पैर हुआ, ऊपर से नीचे दौड़ जाती है। ऊपर नीचे ज़्यादा मत कर लीजिएगा, गिर सकती है। गिर पड़ने का नहीं है, गेट खोल के निकल। इंग्लिश की क्लासेस को अलग से कन्वर्सेशन के इंग्लिश के क्लासेस को लेना है, क्योंकि बच्चों को अगर इंग्लिश इम्प्रूव करवाना है अलग से कन्वर्सेशन के क्लास करना है। कल से उस टाइम पे करना होगा वो वाला फर्स्ट पीरियड जो होता है ना। और हम लोग कुछ कन्वर्सेशन के क्वेश्चंस हैं जो देना है, वो जो सर आप एक बार क्लास लिए थे तो वो होगा ना? वो करना है, लेकिन बहुत स्मूथ है, प्रैक्टिकली करवाना होगा बच्चों से, 2 चीज़ प्रैक्टिकली करवाना होगा, बोलवाना होगा। तो उनसे डेली वो पेशेंस जो है उतने करवाने हैं, पूछवाने हैं, डेली ये होना चाहिए एक श्रद्धा के साथ। जैसे ये काम करेंगे ना अगर डेली, फिर क्या होगा कि उनको ये आप आदत कहाँ पे हैं? मेरा घर क्या सर थोड़ा दूर से आता है, रानीपुर साइड से। कहाँ सर है? रानीपुर का? रानीपुर रानीपुर। मेरा घर ये शुरू में है ना, फिर क्या है ना कि आपको यहाँ अच्छा लगने लगेगा। आप यकीन मानिए हम लोग कभी नहीं सोचा था, हम लोग का ये प्लान 2027 का, लेकिन 2000 ये प्लान था मेरे बेटे को भी स्कूल खोलने का बहुत शौक है, स्कूल खोलने के लिए बहुत शौक है। तो मम्मी हम पढ़ रहे हैं, हम मित्तल के जैसा खोले, मित्तल आरपीयू लवली प्रोफेसर से पढ़ा हुआ है, मित्तल के जैसा हम खोले मम्मी, पढ़ाई कराएं सबको। उसके लिए जगह भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, सारा चीज़ चाहिए। प्रोफेशनल शुरू से टीचर उनका रहा है कि नहीं? नहीं आंटी की अब
पढ़ने में बहुत अच्छा है। एक बार हम बुला देंगे, आप उससे बात कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कि कैसा पढ़ना होना है। अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत किया। हम इन्फैंट से पढ़ा रहे हैं, अच्छा, हम कोई एक्सेसिव नहीं। हम बोले तो हम थर्ड फोर्थ तक उन लोग को हैंडल किए, उसके बाद हम नहीं किए। और फोर्थ तक इन्फैक्ट पढ़े हैं। नहीं, हम हैंडल किए उन लोग को। पढ़ा तो पूरा है एकदम, सारा +2 किया हुआ है वहीं से। वहीं से। अच्छा, सब चीज़ हम ही करते थे जाके। उसके फादर दुकान से फुर्सत नहीं मिलता था, हम ही देखते थे दोनों को। अब उतना दिन हो गया ना तो पूरा सा एकदम हमको वो हो जाता है। करते करते हैबिचुएट हो जाइएगा। थोड़ा सा भूल गई होंगी तो नहीं, कुछ दिमाग में आता कि नहीं ये होगा, फिर कंफ्यूज आता नहीं 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 ये होगा, मतलब थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिएगा सारी चीज़ों को, तो और अच्छे से कर बेटा से पाइएगा। पूछ लेंगे, बेटा आएगा ना तो- सारा यूपीजी का सिलेबस देख लीजिएगा। हाँ ऐसे तो बुक है ही, बुक से भी पहले देख सकती हैं, लेकिन आप जैसे जो बेसिक्स भूल गई है ना, वो देख लेंगे ना अच्छे से, तो आपको और अच्छा से दिक्कत नहीं होगा। और जितने भी और होमवर्क वगैरह इम्पोर्टेंट है मैम, दम दीजिए, गलत मत लिखिएगा होमवर्क में। पेरेंट्स तुरंत क्वेश्चन करते हैं। हम भी एक बार याद कीजिएगा, हाँ, हमने भी भुवनेश्वर की कॉपी पे क्वेश्चन मार्क्स करके भेजा था, हम लिख के दिए थे। तो उसका कॉपी हम चेक करते हैं ना पढ़ाते तो। मैम को इसलिए तो हटा दिए, मैम पढ़ाती थी ना पहले, हाँ। अब से हम पढ़ा रहे हैं कुछ दिन से। आप थोड़ा सा भी देखिएगा कुछ होता कि- है तो मैं टीचर्स को हटा देती हूँ, अपनी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती ना कभी नहीं। तो इसीलिए हम बस चाहते हैं कि कॉपी, इसलिए एक भी मतलब कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो पूछ लीजिए मंजूर है, लेकिन गलत नहीं करना। गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी बहुत 1 महीना पहले हम नहीं 1 साल पहले हम एक स्कूल में गए थे, तो हमको सिर्फ खाली देखभाल करना है। तो कभी कभी हमको देखभाल करना तो बच्चे रहते थे, तो बोली नहीं तो कॉपी चेक कर दीजिए। हमने ठीक है कॉपी चेक करने में क्या है, तो कॉपी चेक कर देते। चेक किए तो बहुत हिंदी ही लिखने में, जनवरी फरवरी लिखने में इतना स्पेलिंग, हम ये सर हमको तो डाउट लग रहा है कि हम डाउट है कि ये डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए तो सर बोले नहीं गलत है, तो हम बोले डांटिए, कुछ भी बोलिए कि बच्चे को गलत नहीं दीजिए, बच्चा गलत पढ़ेगा तो गलत ही नहीं समझेगा। नहीं, ये चीज़ में हम लोग खुद ही बोलते हैं कि एक भी चीज़ नहीं गलत होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग का यही है, पढ़ाइए अच्छे से। यही आप सिर्फ 2 ही आदमी हैं। शुरू से हमें नहीं पढ़ाया, टीचर्स पे भी रखे, 2 टीचर्स को हटा चुके हैं, 3 टीचर्स को हटा चुके हैं, तो फोर्थ में बस अच्छे से काम करिए। इसलिए पहले ही बताती हैं कि गलत मत करिए, कुछ भी कहीं पूछ लीजिए ऐसा करना। वगैरह कुछ नहीं। हमको लगा कि हम कैसे शुरू करें बच्चे के साथ। बच्चे को पहले हम वही नहीं, पहले समझाइए, पहले टेस्ट लीजिए बच्चों को कि बच्चे का पहले नॉलेज कहाँ तक है, हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। फिर आपको पता चलेगा कि बच्चे को मतलब कि काउंटिंग आ गया है, ON1 आ गया है, एडिशन आ गया है, सब्ट्रैक्शन आ गया है, तब आगे को है, समझ रही ना। एक स्टेप ऊपर जाना है, पहले जानना है कि बच्चे को पहले कहाँ तक आता है। अगर आप डायरेक्टली नहीं आएगा तो हमको दोबारा सिखाना पड़ेगा, वहीं से सिखाना होगा, वहीं से यहाँ से जहाँ नहीं गलत है वहीं को सिखाना होगा, वही बोल रही हूँ। आपको भी मेरे ही पढ़ाने का तरीका है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को तुम याद करवाना ज़्यादा जरूरी है। बच्चे याद खुद से नहीं करते हैं। जैसे वो मैम करती थी क्या कि बच्चे को स्पेलिंग देके छोड़ देती थी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैम बच्चे को जब स्पेलिंग दी तो बच्चे को पढ़ना आना चाहिए ना, कि बच्चा LOTUS लिखे है, बच्चा LOTUS बस पढ़ लिया, उसको पढ़ नहीं पाएंगे, वो लोटस लिखा हुआ है। लोटस का मतलब क्या होता है? तो पहले आप LOTUS लोटस बुलवाना सिखाइए कि वो लोटस है, LOTUS, तब तो रीडिंग सीखेगा ना। तब तक आप स्पेलिंग इस तरह से सिखा दीजिएगा। रीडिंग अभी तक मैं जितने भी बच्चे को पढ़ाई हूँ सबको 1 UKG तक रीडिंग आ जाना चाहिए। सब नए स्कूल के बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल के, जिन लोगों को भी रीडिंग नहीं आता है। तो हम मेरा सबसे पहला रीडिंग कराने में कैसे हुआ? तो सबसे पहला फोकस मेरा यही है कि बच्चे को रीडिंग करवाना। हिंदी इंग्लिश में कंपलसरी है। अब बच्चे के सामने जितनी भी आपको इंग्लिश आती है ना, एज मच एज पॉसिबल आप उसको इंग्लिश में ही डील करेंगे तो अच्छा लगेगा।
उसके लिए हम चार्ट दे देंगे आपको, वो प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बच्चे के सामने कम से कम वो इंग्लिश में आप बोल समझ सकते हैं। लेते हैं लेकिन बोल नहीं वो पाते। जो करेगा ये काम कुछ चीज़ें तो बोलना पड़ेगा मैम, जैसे ओपन योर बुक्स, क्लोज योर बुक्स, ब्रिंग आउट योर डायरी, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, व्हाई डिड यू नॉट डन योर होमवर्क, कुछ चीज़ें जो है आप लर्न कर लेंगे ना तो आप और अच्छे से मतलब इम्प्रूव हो क्योंकि जाएगा। मैम वो आपको ही कॉपी करेंगे, आप ही को कॉपी मेरे से करेंगे भी सीखे, मेरे से भी मतलब वो इनको बच्चे आपको ही कॉपी करेंगे, क्योंकि बच्चे टीचर्स को के ही बच्चे टीचर को कॉपी करते हैं। हाँ। हम लोग जो बोलेंगे वो बच्चे करते हैं। व्हाई डिड यू नॉट ब्रिंग योर कॉपी बोलेंगे तो वो कुछ रिप्लाई करेगा, चाहे डू यू हैव अ पेंसिल बोलेगा आई हैव अ पेंसिल। तो कुछ चीज़ें जो कन्वर्सेशन करते हैं ना, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, हाँ लगभग प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होता है वो उसी का कन्वर्सेशन बनाना लिस्ट बना देते हैं। हाँ, उसको बच्चे को भी सिलेबस लर्न के जैसा उसको याद करवाइए, रिवीजन करवाइए। बच्चे भी इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। वैसे कुछ चीज़ें जो है जो डेली जो daily यूज होता होता ही नहीं है कि मैं आपके पास पेंसिल है ना, मेरे पास हाँ। पेंसिल नहीं है, इरेजर ये आपको नहीं daily है, पूछना नहीं ये है। पूछना ही होता और है। बच्चे को जवाब देना है। देना जैसे है। देने में हाँ, कैसे बोलते हैं, हाँ। बच्चा बोलता है वैसे हाँ, ये ये भी है, हाँ। ये कर देंगे। वो बच्चा जो है ना हैदराबाद से जो आया है वो उतना समझ जाता है, हर लैंग्वेज को समझ जाता है और इंग्लिश में बोलता है, आराध्या नहीं करती है तो वो समझ रहा है, तो अच्छा लगा वो बच्चा। तो इसी तरह धीरे धीरे हर बच्चे में ये चीज़ आना चाहिए, जरूरी है। स्कूल का मेन मोटो ही हम लोग इसलिए खोले हैं ना मैम, इंग्लिश में टॉक कीजिएगा तभी जाके बच्चा इंग्लिश में इंग्लिश बोलेगा। स्कूल का खोलने का पीछे रीज़न है कि यहाँ जितने भी स्कूल है ना बच्चे लोग को नहीं अच्छे से पढ़ा रहा है, क्योंकि हम लोग की कोचिंग में हर वो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो इन्फैंट के बच्चे हो, चाहे वो गॉर्डविन के बच्चे हो, चाहे वो सिटी माउंटेसरी, अरोड़ा, टेंडर हर्ट्स, सर्वोदय, जिससेन मेरी, सब स्कूल के बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं। बच्चे भी कुछ देर बाद 11 बजे से आएंगे, इवन कि यहाँ की गाइडलाइन है, रिलायबल है, सब स्कूल के बच्चे आते हैं। लेकिन सारे में डिफरेंस पाए, ये जो स्कूल तो पूरी तरह से खत्म ही हो गया है, गाइडलाइन तो खत्म है। रिलायबल भी नहीं अच्छा है, लोग देख चुके हैं, बच्चे को गलत गलत पढ़ा रहा है। दूसरा जो है ये सारे स्कूल की बात करें तो ये सारे स्कूल में डिजिटल लर्निंग में एकदम डल है। जिससे मेरी फी भी बहुत आगे है, 4,500 फी ले रहा है बच्चे लोग का, 4,500 एक बच्चे का फी ले रहा है। लेकिन बच्चे को जो देना चाहिए वो नहीं, इंग्लिश में तो पढ़ाता ही नहीं है, नाम के लिए बड़े बड़े स्कूल। वो मेरे मायके के जितने भी आदमी है ना सब वहाँ पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ 2 बच्चे अरे हैं। लेकिन ये नहीं है कि मेरे मायके के जो परिवार में है सारे मतलब जो बिरादरी में है सब पढ़े लिखे बाहर से, सब यूपी से पढ़े हुए हैं। जो लेडीज खाली जाती है, जेंट्स नहीं जाते, खाली लेडीज जाती है और सब लेडीज बाहर की यूपी की अच्छा, और सब पढ़ी ही है। तो जैसा आप बोलिएगा वैसा वो पढ़ाई। हिंदी में ही पढ़ाया जाता है उस स्कूल में, जिसमें इतना बड़ा स्कूल है, 4,500 की फी ले रहा है। हाँ और पढ़ाई बोल रहा है कि हम ICC ये एफिलिएटेड है स्कूल है, और इसमें इनफैक्ट में है कि इंग्लिश में टॉप करना है। कंपल्सरी है, कंपल्सरी। मेरा भाई उसी से निकला है। कंपल्सरी उसी में बात करना है इंग्लिश। रंजना झा जो टीचर है, बड़ा बड़ा जो इसका जो लंबी चौड़ी टीचर से, रंजना झा नाम का सेठी टीचर से लगता है। नहीं कविता किरण है, अब पुरानी में बता रहे हैं, अब हो गई नहीं होगी, लेकिन लेकिन कविता किरण पुरानी नहीं है। रंजना झा टीचर से बात बहुत अच्छे। मेरे इस बैच में निकला है। SST टीचर्स पढ़ाती थी, SST सब्जेक्ट को लेती थी। बोलता था कि मैम इतनी स्ट्रिक्ट है ना, इतनी स्ट्रिक्ट है, बहुत पिटाई भी करती है। अगर कोई बच्चा हिंदी में भी बोले, एक शब्द भी वहाँ हिंदी यूज नहीं होता है, जो हिंदी में यूज करता है उसको पनिशमेंट मिलता है। ऑफिस भी जाना है, किसी को क्वेश्चन में बोलना है तो आपको इंग्लिश में ही पूछना है। तो आजकल पीटर रोस्टा के जो ऑफिस में भी बच्चे जाते हैं ना तो हिंदी में नहीं पूछते हैं, वो टीचर अलाउ ही नहीं करेंगे, जो डायरेक्टर है स्कूल का, रंजन जोसफ तो वहाँ का हो गया है, यहाँ तो वो वही है। लेकिन वहाँ पे का पढ़ाई बहुत वो हुआ है। 12th का अच्छा पढ़ाई नहीं है, 9, 10, 11, 12 का नहीं है, लेकिन 1 से लेके 8 तक का भी वो स्कूल जो है ना कंपल्सरी इंग्लिश में पढ़ाता है, तो ओरिजिनली सेम टाइम से 9 से लेके 12 तक का पढ़ाई बहुत अच्छा देता है। तो इसीलिए हम लोग भी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ के हिंदी में ही बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते नहीं हैं। तो इसी वजह से हम लोग प्लान है कि नहीं इंग्लिश में ही करना है, रीडिंग स्ट्रॉन्ग करना है, कन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कन्वर्सेशन से ही बच्चे इंग्लिश जल्दी सीखेंगे ना। कल और सब बच्चे आएंगे, आज फर्स्ट डे है, सब एब्सेंट है,
अभी छुट्टी है ना 30 तक, डीएम का ऑर्डर है तो लेकिन मैक्सिमम स्कूल खुल गया जिस वजह से खोलना पड़ा। नहीं तो अभी वहाँ से आया है उसका बंद है, अरोड़ा वाला नहीं, अरोड़ा सर तो खुल जाएगा पक्का 30 तारीख को। सरवजे का भी पढ़ाई अच्छा है। दम नहीं है, दम नहीं है, कैसे बोल रही है। अब बच्चा स्कूल का आता है तो बता रहे हैं। अभी पढ़ाई किसका अच्छा अगर बात करेंगी तो इस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है गुरहट्टा, उसका पढ़ाई बहुत अच्छा है। इन्फेंट का है पढ़ाई अच्छा, और ये क्या बोलते हैं जिससे मेरी भी ठीक ही ठाक है, लेकिन इधर का स्कूल लोकल स्कूल मैम हम पढ़ाए ना तो सबका क्लास लगा के आए हैं। ठीक ही है। सर वो बच्चे गिराए नहीं है, उसमें देख लीजिए कि बच्चों को ये मना करें कि एक दिन क्लास में गंदा नहीं करनी I चाहिए। already checked. ये पहला दिन है मैम, थोड़ा सा लगेगा आपको, और फिर उसके बाद बहुत चीज़ें समय के साथ
आप ले गए ना सर मार्केट में scared me. You really made me scared. Which one to the WhatsApp? Which one to the Wi-Fi? You are live every time actually. You are live every time. This is live every time. We haven't. Always please inform me, sir. Inform me, sir. What are you doing? No worries. School is closed. What happened? His school is still no worries. What time you will come? As I informed him, 1 p.m. We can call them early. 11. But you have to inform the school. So make sure you have this informed to account. But his father has. His father is. Leave it. We have already mentioned him yesterday. We don't have to. Tanya? We want to play. Father has already informed us that they will have to be but you have to inform the father that man and family Feel like after father to have like
Yeah. One by one, we will call Okay. students. You have to first call Shanvi. Shanvi. Shanvi, call Shanvi. Shanvi. We will wait for the taking place. Yeah, that's what I'm saying. The mother can come and they come to Okay, wait for their mother. When will your mother will Mom come? will come here. Your mother will come. I will call you. I will call you first. No, go on there.
कर दी पूरा हाँ ठीक है बहुत अच्छा है। 3-4 जगह कल इसमें स्टार देख लिए बच्चे लोग। नहीं नहीं ठीक है Ma'am, हाँ give me the glass. गिफ्ट हाँ, करना कल पड़ेगा। से लंच बोल देंगे लेकिन बताइए उनको, प्रॉपर्ली एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वो है वो साफ से Anyway, तुम करो। अपना एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ले ले जाने को पता नहीं है बच्चे हैं कि बोले नहीं हाँ, बिगिनिंग है। अब ले लो ना। सर First time मिलेगा जिसमें बच्चे लोग lunch time is over. yeah Lunch time because is over. 11 p.m. they will have to leave most of the school is closed and they have to leave Ma'am. as soon as possible. Then I am going to Now go to that class now. It's a math period now. Inform to math ma'am for math class. I'll pay online. Glass. Where is the yeah. Math period. Ma'am, if possible, you have to take maths. Learning it doesn't depend on me. नहीं तो हम लेंगे। अभी जा रही
sir. कप नहीं ला बोले थे ना कैसे कर दीजिए उनको जैसे डिस्पोजल कप ये ना क्या तो थोड़ा भी कप में ना भरता है सब ऐसे तो इतना बड़ा क्लास लाते थे कब हम बोल ही स्पेशली कहते थे कब लेकर आइएगा तो आज आप लेके नहीं आए हैं। और उतना तो तुम उतना बड़ा कप दे दो वो भी वैसे ही नहीं उनको इतना भी मतलब ना अपनी ज़्यादा ही सोचो। ऐसे भी कल से नहीं भी दे रहा है। Sir, you are always active. Every time. Why I forget? But have you completed? Okay, I will come you. I will come. बहुत मतलब होता है तो इतना कम हम हैं जो ला कर रखते हैं हमारी इज्जत मतलब उनको व्यस्त बनाते हैं हम हैं ठीक है तुम दो हम अच्छे
I don't know. No, I don't want that. I don't want that. Sir, I don't want. what are you doing? So you see, 4 this is 1 3 You don't ask her how much are you expecting. Don't say that we are giving you this. How much is your expectation? Then we will counterbalance. Balance and counterbalance, balance and counterbalance. And if shared, that's it. कितना है ये? Sir, you have to state the mixed fraction, right? Mixed fractions, you have to give a mixed fraction. So sir will teach you. Sir will teach you. Sir, make them learn. Mix. Sir, mix. No sir, mixed fraction, you will have to give them mix. Right will come left. Down will go up. Up will go down. Again. Your turn. This is a CCTV. Sir, 15 minus 12. Now right will come left. Down will go up. Up will go down. Again. 4 pizza. 5 minus 2 3. Right will go left. Down will go up. Up will go down. Again. Wrong. Seventeen divided by 7 2 7 minus 4. Right hand side will go left.
down will go up will go down. Time to finish up the live. See you guys tomorrow.